Good evening and welcome. It's 8 p.m. on the clock. It's time for the news on NDTV. I'm Ankit Tyagi. In a shocker from the national capital, a senior Delhi government official arrested for raping a minor girl. His wife also arrested for providing abortion pills. Amid growing outrage, Delhi government suspends the officer. Politics continues. Telangana Chief Minister KCR's moves first and fast, even before the Election Commission is yet to announce the poll dates in Telangana. KCR's party has announced candidates for 115 out of 119 assembly constituencies. The Chief Minister will contest from 2 seats. No trade at Asia's largest onion market in Maharashtra. Farmers angry over government's 40% export duty. Government says aiming to curb rising prices of onion. NDTV नेटवर्क गर्व से पेश करता है नया रीजनल चैनल NDTV मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़. Ahead of the crucial Madhya Pradesh and Chhattisgarh polls, top politicians at the launch of NDTV's MP Chhattisgarh channel. Political war of words between top netas. Team India squad for the upcoming Asia Cup is announced. KL Rahul, Shreyas Iyer and Jasprit Bumrah are making a comeback. Yuzvendra Chahal and Ravindra Ashwin miss out. Chandrayaan 2 welcomes Vikram lander. In fact, Chandrayaan 3's lander establishes contact with Chandrayaan 2 orbiter. ISRO tweets to give the information. A senior Delhi government official working in the government, in fact, of Delhi, and his wife have been arrested by the Delhi police after the officer was accused of raping a teenage girl. This shocker, in fact, coming in from the national capital. This girl, who was the friend of, in fact, the daughter of this man's friend, was raped in 2020 when she was 14 years old. The police say the official's wife allegedly gave the teen abortion pills when she became pregnant. The teen is in severe depression, and while undergoing the treatment, she told the doctors about her ordeal. Senior Delhi government official Premoday Khakha and his wife arrested by the Delhi police. After Khakha, an officer on special duty with the Women and Child Development Department, was accused of raping a teenager, his friend's daughter, repeatedly over a 5-month period from October 2020 to February 2021. The teen was 14 at the time of the alleged crime and was living with Khakha and his wife after the death of her father, who was known to the accused. Khakha's wife allegedly gave the teen abortion pills after she became pregnant to keep the matter under wraps. After suffering repeated panic attacks earlier this month, the teen's mother admitted her to hospital, where she detailed the incident before doctors. हमारे पास हॉस्पिटल से इतला आई थी और 13 तारीख को ये पॉक्सो और 376 के सेक्शंस और अदर सेक्शंस के अंडर ये केस दर्ज हुआ है. हमारे एक नाबालिग लड़की है जो हॉस्पिटल में इलाज कराने उसको उसकी मदर लेकर आती है, तो उसके दौरान जो उनकी ट्रीटमेंट में मेडिकेशन में जो निकला है उसके चलते ये केस हुआ है. The allegations against the officer have sparked massive outrage, with Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal moving to suspend him. जो बात आ रही है कि उनकी पत्नी खुद इसके साथ इस कृत्य के अंदर सम्मिलित थी, ये तो बहुत हैरान कर देने वाली बात है और पूरे समाज को हिला देने वाली घटना है. तो अब मुख्यमंत्री जी ने स्वयं इस अधिकारी को सस्पेंड करने के आदेश मुख्य सचिव को दिए हैं. सख्त से सख्त सजा इसके अंदर होनी चाहिए. The Delhi police say the teen survivor is not in a condition yet to give a statement before a magistrate. Police, however, are making arrangements to ensure this is done as soon as she feels better. With Mukesh Sengar, Bureau Report, NDTV.
Meanwhile, some disturbing news coming in from Manipur as well, where tribal groups have reimposed a blockade on the National Highway 2, the NH2, seen as the lifeline of Manipur. Now, this highway links Imphal to Dimapur in Nagaland. Now, the tribal groups have given a 3-day ultimatum to the government of Manipur. Remember, earlier the blockade was lifted after the Home Minister intervened in the state. Let me go across very quickly to my colleague Ratnadeep Chaudhary, who is joining us with more details on this. Ratnadeep, what is this ultimatum that has been given by the tribal groups? In fact, the ultimatum was given earlier last week, in fact, when they had told the government that you have 3 days time to make sure that essential supplies like rations and as well as relief items, medicines from state capital Imphal reaches the hill areas, particularly the Kankopi district, because the allegation that the tribal groups have leveled is that in the border areas between the hills and the valleys, there are other pressure groups from the other community who are stopping these essential supplies to reach the Kankopi district. Now, the Committee for Tribal Unity Kotu, which is a powerful tribal body, has from today shut down the National Highway 2. It is seen as the lifeline of the state because this is the shortest road connectivity from state capital Imphal to any other part of the country through Nagaland. The alternative route is the National Highway 37, which is the longer route via Assam, Meghalaya, and again back into Assam, southern Assam, and then to Manipur. And this route, at this point of time, with a lot of rainfall, it is prone to landslide, and so therefore this is going to be another tough situation for the Manipur government to handle, even as the tribal groups have imposed this indefinite, shutdown of the National Highway 2. So first, the challenge of the violence. Now, of course, essential commodities which will suffer because of the blockade. Challenges galore for the government there in Manipur and also from the government at the centre. Thank you, Ratnadeep, for joining us with all those details. Moving on, ladies and gentlemen, Telangana Chief Minister KCR has moved very, very quickly ahead of the polls in the state of Telangana, which are expected at the end of the year. Now, KCR has announced BRS candidates for most of the assembly seats. The candidates have been announced for 115 of 119 seats in the state. Now, KCR himself is going to contest from 2 seats. The Chief Minister will contest from Gajwal and Kamareddy seats. First mover advantage for the ruling BRS in Telangana as Party President Chief Minister K. Chandrasekhar Rao announced his first list of candidates for 115 out of 119 assembly seats in the state, seeking a third term in office. 95 ప్లస్ గెలవాలని నా అంచనా అండి. 95 to 105 మధ్య. ఎమ్మెల్యే ఎలక్షన్ కాదు, ఎట్లా మీరు గెలిపిస్తారు, మీరు ఆశీర్వదిస్తారు, నాకు ఆ విశ్వాసం ఉంది. ఎంపీ ఎన్నికలలో కూడా ఖచ్చితంగా 17 సీట్స్ గెలవాలా. ఇందులో మాకు ఎటువంటి అరమరికలు లేవు. మజ్లిస్ పార్టీ, బీఆర్ఎస్ పార్టీ రెండు చట్టాపట్టాలు వేసుకొని ఫ్రెండ్లీ పార్టీగా మేము ఉన్నాం. KCR has chosen to retain most sitting MLAs, bringing in new candidates for only 7 seats. Anti-incumbency, if any, leaders say, will be overridden by KCR's development and welfare template. KCR himself will be contesting from Kamareddy in addition to his Gajwal assembly seat. So, our Honorable Chief Minister and our party leader K. Chandrasekhar Rao, KCR, is confident that in spite of having some anti-incumbency to some individuals in their respective assembly segments, yes, our party glamour and the schemes which we have implemented, definitely it will give results in winning. Both the Congress and the BJP seem still weeks away from announcing candidates. Chief Minister KCR, who would largely target the BJP till a few months ago, now trains his guns largely on the Congress that has gained momentum post its victory in Karnataka. Karnataka has no relevance to Telangana. And because what is happening in Karnataka, now people are realizing, treacherous power cuts, load shedding in Bangalore city, where we don't expect to happen. What is happening there? Chala Bagdanalu visvarinchesaru vallu. Most of his sitting MLAs have all been retained. 98% I must say have been retained, which certainly shows quite a bit of confidence because he is seeking office
third consecutive time, meaning he's hoping to stage a hat-trick with these elections. 2018 also, K. Chandrasekhar Rao had in fact announced his candidates at one go, surprised his competition, but at that time, of course, circumstances were different because he was at that time dissolving the assembly and advancing the elections as well. One question that's being asked is, why is KCR contesting from two places, Kamareddy as well as Gajwel in Hyderabad? With camera person Nagraju, Uma Sudhir, NDTV. Meanwhile, anticipating rise in the onion prices across the country after the shocker that tomato prices in fact produced for the government is taking proactive steps. The onion prices, the government has imposed 40% export duty on onions, but this has upset the farmers. And at the Maharashtra onion trade market, in fact, all kind of the onion, in fact, trade was stopped today in Lasagaon. The farmers are saying that the export duty will lead to big losses for them. No trade at Asia's largest onion market in Maharashtra's Lasagaon to protest against the Government of India's decision to impose a 40% export duty on onions. The government says it is trying to regulate onion prices, which were 21% higher this week compared to the same time last year. After the explosion in tomato prices, a kilo sold for over 200 rupees in some parts of the country. The government says it's trying to be more proactive in keeping prices in check. But Maharashtra's farmers are unhappy. हर व्यापारी के पास हाथ में माल है और वो 40% शुल्क लगाने की वजह से आगे वो भाव में माल नहीं मिलेगा, व्यापारी का भी नुकसान होगा। व्यापारी का नुकसान होगा तो वो किसान का माल कम भाव में लेंगे, इसके वजह से किसान को भी नुकसान पहुंचेगा। कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना या राज्याचा कृषी मंत्री म्हणून एक गोष्टीचा विश्वास देऊ इच्छितो की जे एक्सपोर्ट ड्यूटी 40% केली गेलेली आहे ती स्वाभाविक आहे की शेतकऱ्यांसाठी कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी अन्यायकारक आहे. 1200 kilometers away from Lasagaon in the capital, New Delhi, government outlets have started selling onions at Rs 25 per kilo at 10 locations, a move to contain prices ahead of the festive season. The sale of subsidized onions have started in the NCCF headquarters. You can see these posters. It is now being made available to common people at the rate of 25 rupees per kilo. What is the objective now? What is the quantum you have decided, and how many days this will continue in how many cities? As of now, we are selling both onion and tomatoes in our mobile vans and multiple outlets. The objective is that we are also getting information that prices of onion have shot up drastically. So to control the prices, Department of Consumer Affairs, our Honorable Minister Shri Piyush Goyal ji has intervened, and we are trying to control the prices through that. आपके इलाके में अभी प्याज कितने रेट पे मिल रहा है? 50 रुपए पहुंच चुका है. हाँ, 40-50. मैडम, आपका घर कहाँ पर है? मैं द्वारका में रहती हूँ और वहाँ पर प्याज बहुत महंगा है. कल ही 45 रुपीस केजी में लेकर आई हूँ और मैं शुक्रगुजार हूँ सरकार की, NCCF वालों की, जिन्होंने 25 रुपए अपडेट कर दिया है. The challenge on the onion front is getting bigger, and the government will have to intervene on a bigger scale to control the prices. With Pooja Bhardwaj in Mumbai and Himanshu Shekhar in New Delhi, NDTV Bureau Report. Meanwhile, it has been a grand launch for NDTV's new channel, the NDTV Madhya Pradesh Chhattisgarh regional channel from the heart of India. The NDTV MP Chhattisgarh channel was launched today. In fact, it is available on your cable and DTH. You can also log on to our website, mpcg.ndtv.in. Top politicians grace the stage in both the states for this event. In Madhya Pradesh, Chief Minister Shivraj Singh Chauhan, who in fact went onto the stage and said his government is headed for a record win in the state. His arch rival, Kamal Nath, came out and saying that Shivraj Singh is copying the announcement of the Congress party. In Chhattisgarh, Bhupesh Baghel from the Congress party said he brought development to the state and he is assured of victory. This time, Raman Singh, the former chief minister,
was in fact called the current government of Chhattisgarh most corrupt. Take a look at all these dignitaries on the stage of Madhya Pradesh, Chhattisgarh, NDTV. आपको पता है कि एनडीटीवी खबरों की दुनिया में भरोसे का, विश्वास का दूसरा नाम है। इसी प्रकार एक बदलाव ये आया है कि एनडीटीवी की जो अब नई ओनरशिप और नया मैनेजमेंट है वो एएमजी मीडिया नेटवर्क के पास है। बीजेपी कहती है डबल इंजन की सरकार, तो डबल भरोसे की पत्रकारिता हम आपके सामने करके दिखाने की कोशिश करेंगे। भरोसे की जिस अनमोल विरासत को एनडीटीवी नेटवर्क ने सालों से संजो कर रखा है, उसी भरोसे को मिलने जा रही है नई ताकत। अब होने जा रहा है खबरों में आपके भरोसे का विस्तार। चैनल और सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपके राज्य की खबरें दमदार। एनडीटीवी नेटवर्क गर्व से पेश करता है स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी के साथ नया रीजनल चैनल एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। टीम एनडीटीवी का मैं मध्य प्रदेश की धरती पर हृदय से स्वागत करता हूं और मैं इस बात के लिए भी आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने अपने गुलदस्ते का पहला फूल मध्य प्रदेश को दिया है। हमारे जो एडिटर इन चीफ है उनका कहना है कि ये एक हाइपर लोकल रहेगा, लोकल इश्यूज पे बात करेगा और पॉजिटिव इश्यूज पे बात करेगा। आपको सबसे पहले बधाई, आज आपका चैनल लॉन्च हो रहा है और मुझे उम्मीद है जो प्रेस का दायित्व है आप सब इसका पालन करेंगे। एनडीटीवी का विश्वास जो आप लोगों के दिल में रहा है वो अब हिंदुस्तान के दिल में भी आ गया है। छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ी अस्मिता, छत्तीसगढ़ियावाद, ये अब एक हाउस होल्ड चर्चा का विषय बन गया है। छत्तीसगढ़ राज्य बना भी तो 3 साल तो बनने में निकल गया, लेकिन लोग महसूस ही नहीं कर रहे थे कि हम लोगों का अपना अलग राज्य बना है। भाषा के हिसाब से राज्य बन गया, लेकिन सांस्कृतिक रूप से आज भी वो संस्कृति जीवित है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री हमारे साथ हैं, रमन सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। मैं बहुत सारी शुभकामनाएं एनडीटीवी छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश लॉन्चिंग के इस अवसर पे शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। और छत्तीसगढ़ देश के सामने किस प्रकार हम प्रस्तुत करना चाहते हैं, एक सार्थक भूमिका एनडीटीवी के उस पर रहे और निश्चित रूप से जो हमारा अनुभव है इस पे आप सफल हो, ये मेरी शुभकामना है। आप देख रहे हैं एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं ज्योतिषी नहीं हूं, लेकिन मैं पूरे विश्वास के साथ ये कहता हूं कि अब तक के सारे रिकॉर्डों को तोड़ के भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक विजय प्राप्त करेगी। और ये मैं केवल यहाँ बैठ के नहीं कह रहा हूँ, ये मैं तो 24 घंटे जनता ही में रहता हूँ, अब भी जनता ही में जा रहा हूँ। जनता के प्यार, स्नेह और समर्थन के आधार पर कह रहा हूँ। सबसे पहले तो आपने कहा कि शिवराज सिंह जी ने ये अनाउंसमेंट्स करे हैं। ये सब अनाउंसमेंट्स आपको आखिरी 5 महीने में क्यों करने, क्या आवश्यकता है? अगर आपका कार्यकाल सफल रहा है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपकी पार्टी के विदिन के झगड़े की बात करूंगी अब, और ज्योतिरादित्य सिंधिया आपके साथ नहीं है, अब वो भाजपा के साथ हैं। इस बार चुनाव वो लड़ेंगे। भाजपा ने खास तौर पर ग्वालियर रीजन पे फोकस किया है क्योंकि उनको लगता है कि वहां पर शायद इम्प्रूवमेंट हो सकती है। कितना नुकसान हो सकता है ज्योतिरादित्य सिंधिया फैक्टर से? अभी हाल में 10-12 महीने पहले मेयर का चुनाव हुआ ग्वालियर में, महापौर का चुनाव। 35 साल बाद कौन जीता? कांग्रेस जीती। मुरैना में चुनाव हुआ मेयर का, कौन जीता? कांग्रेस जीती। आज तो बीजेपी में शिवराज, महाराज और नाराज, इन 3 भागों में बटा हुआ है। जनता की समस्याएं देख के, तकलीफें देख के लोगों के कल्याण की योजनाएं बनाने का काम किया। जनता के लिए, जनता का, जनता के द्वारा शासन यही होता है। एक बहुत बड़ी सफलता मैं मानता हूं कि जो राम का नाम लेने से डरते थे वो आज रोज हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। अगर हम कहते हैं 500 रुपए सिलेंडर देंगे, मुझे तो खुशी होगी अगर शिवराज सिंह जी हमारे कहने पर इसकी घोषणा कर दें। मुझे ये भी खबर है कि शायद वो करने वाले हैं, मुझे खुशी होगी। ना अमित शाह का रिपोर्ट कार्ड, ना शिवराज का रिपोर्ट कार्ड, मैं तो कहता हूं कमलनाथ का रिपोर्ट कार्ड भी नहीं चलने वाला। हमारी जो सरकार रही
मुझे रिपोर्ट कार्ड देने की जरूरत नहीं है, जनता गवाह है। शिवराज सिंह जी की जो राजनीति, नारियल फोड़ने की, सड़क होए पुलिया होए, नारियल जेब में रखते, नारियल फोड़ने निकलते, नारियल टूटता नहीं, सड़क टूट जाती है, पुल टूट जाता है। गवर्नमेंट की बात है तो हम लोग भी लगातार भ्रमण कर रहे हैं, पूरे प्रदेश भर, हर विधानसभा में जा रहे हैं, जिलों में जा रहे हैं, तो वहाँ सरकार के प्रति नाराजगी दिखाई नहीं देती, चाहे शहर हो या गांव। नाराजगी दिखाई देती है वो एमएलए के खिलाफ कहीं कहीं दिखाई पड़ती है, लेकिन उससे और थोड़ा सा नीचे जाएं तो विधायक तो अच्छा है, उसके साथ जो आसपास के जो लोग हैं, 2-4 लोग, वो गड़बड़ है, तो वह एंटी इंडियन उसी स्तर पर भी है। ओ, तो ये विधायकों के लिए आपका एक संदेश है कि जो साथ में चल रहे हैं उन पर भी जरा, उनको भी भाई संगत का असर तो पड़ता ही है। हाँ। यदि मैं संकेत उपाध्याय के साथ बैठा हूँ तो उसके जो व्यक्तित्व तो उसका प्रभाव तो मुझे और पड़ेगा, उसका लाभ हानि दोनों मिलेगा मुझे। भारतीय जनता पार्टी को वोट क्यों करे? क्योंकि सबसे बड़ा कारण मुझे लगता है कि जो हालात में परिवर्तन आया है, 15 साल भारतीय जनता पार्टी विकास की गंगा बह रही थी, शांति का टापू बना हुआ था छत्तीसगढ़, देश और दुनिया में एक पहचान बनाने में सफल हुआ था, एक विकसित तेजी के साथ विकास करते हुए राज्य के रूप में। वो छत्तीसगढ़ आज भ्रष्टाचार का गढ़ बन गया है, अपराध गढ़ बन गया है। जितना करप्शन, जितना भ्रष्टाचार इस 4.5-5 साल में हमने देखा, हिंदुस्तान में मैं नहीं समझता इससे ज़्यादा कोई करप्ट सरकार काम कर रही हो जो छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के नेतृत्व में सरकार काम कर रही। सारे क्षेत्रों का अवमूल्यन हुआ है। ये स्थिति बन गई कि कलेक्टर को अब कलेक्टिंग एजेंट कहने जाने लगा। कांग्रेस पार्टी बहुत लंबे समय से अनेक चुनाव हारती रही है, लेकिन हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक के बाद हम लोग जीतना भी सीख गए हैं। आप चिंता मत करिए, छत्तीसगढ़ में भारी बहुमत से हम लोग जीतेंगे। और 71 था, हाँ, हमारे पास 71 तो विधायक हैं ही। हाँ। अब वो 71 के बाद वो आंकड़े और भी बढ़ेंगे, लक्ष्य भी और बड़ा, जैसे कि अभी 75 का नारा लगा। हाँ, अब की बार 75 पार। हाँ हाँ, राज्य की सरकार बदल जाए और केंद्र में फिर से मोदी जी को वोट मिले, ये लक्ष्य बना के हम चलेंगे। हमारा लक्ष्य तो यही रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में हम जीत के आए, और उसके लिए रणनीति के साथ, कार्य योजना के साथ हम काम कर रहे हैं। हमारे पास 2 ताकत है, 15 साल के विकास के काम जिसमें छत्तीसगढ़ के एक एक क्षेत्र को विकसित किया गया, और दूसरा मोदी जी के कार्यकाल का स्वर्णिम जो कार्यकाल है, उस कार्यकाल में जो विकास के अद्भुत काम हुए, उनको लेकर जनता के बीच जाएंगे।